Good afternoon, dear students and concerned teachers. I am Mukesh Lakra, Assistant Teacher of Government High School, Jeddah. I welcome you all to this live virtual class of our Sundargarh district. Dear students, in the last class, we had discussed about the first part of a very beautiful story, that is the first step. Today, we will be dealing with the second part of it. So let's go to the smart board and learn together. So dear students, from the first class itself, we came to know or we came to realize that this topic is completely based on educational rights of girl children or female education. So dear students, we would focus on recall our concepts what we have learned in the last class. So let's recapitulate something to recall our concepts and ideas. So we find here recapitulation. So there were 4 characters in the first part of the story. So in the beginning or in the first part we had 4 characters, and the 4 characters were Ammu, Chelappa, Chinni and Mrs. Mohan as new owner. There were 4 characters, dear students. 4टी character थिले, सेमानक मध्यरु के थिले, अम्मु थिले, तापरे Chelappa, Chinni and Mrs. Mohan. Ammu was the 10-year-old motherless girl. Ammu के थिला ना 10 वर्ष गोटे माँ छुंड झियो थिला. And Chelappa was the watchman at the big house. Chelappa कौन थिला ना watchman से गोटे जोगवाड़ी थिला ना कोठी ना big house रे. Chinni was the son of Chelappa and brother of Ammu. Chinni किए थिला was the son of Chelappa. से Chelappa रो वो थिला एवं brother of Ammu. Okay. Mrs. Mohan was the new owner of the big house. Mrs. Mohan किए थिला? Mrs. Mohan थिले new owner of the big house. And next, the new owner of the big house was in need of a reliable maid. The new owner of the big house was Mrs. Mohan was in need of से दरकार करुथिले कोन of a reliable maid. What is the meaning of reliable, dear students? Reliable माने होची विश्वस्त, जहा को हमें विश्वास करिथाउ ताकि हमें reliable कहिदौ. So reliable maid. Next point, Chelappa wanted her daughter Ammu to work as a maid in the big house. Chelappa, who was a watchman in the big house, who genuinely wanted his daughter Ammu to work as a maid in the big house. Chelappa चाहूतिला ता निज झियो के अम्मु बिग हाउस रे गोटे चाकराणी भाबरे काम करिवो. In Chelappa's view, if Chinni will be educated, he will get good job. Chelappaଙ୍କର ମତରେ ଯଦି Chinni educated ହେବ ବା ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବ. So dear students, these are the few lines which we recollect to bring more clarity on our concepts of previous class. So let's go to the next slide. So dear students, in order to bring more clarity on your ideas, on your concepts of previous class, along with this class also, I have added those characters, those 4 characters once again. Okay, so these are 4 pictures you find here. So first picture is Ammu, second is Chelappa, third is Chinni, and fourth is Mrs. Mohan. So who is Ammu? Ammu is a 10-year-old girl. From the first class itself, we know who is Ammu. Ammu is a 10-year-old motherless girl. And in the second picture, Chelappa. Who is Chelappa? Chelappa is the Ammu's father as well as Chinni's father. Okay. So in the third picture, we find Chinni. So who is Chinni? Chinni is Ammu's little brother and Chelappa's youngest son. And in the fourth picture, you can see there is a lady in the white and red dress who is the representative of Mrs. Mohan. Who is Mrs. Mohan? Mrs. Mohan is the new owner of the big house. Next, go to the next slide. So dear students, from the very beginning of the story, from the first class itself, we have come across a house that is called big house. आमे प्रथम क्लास रु जानिबा को पाउछे बा सुनिबा को पाउछे गोटे बिग हाउस अछि जोथिरे छेलाप्पा कोन जोगवाडी अछंती एवं मिसेस मोहन अछंती से बिग हाउस रो गोटे नुआ मालिक. So this is the pictorial representation of
the big house, to boost your imagination, to boost your knowledge. So here we find our text. I have divided 3 sections of this second part. So this is the first section. Okay. So dear students, I will read the text loudly. Meanwhile, you can correct your pronunciation if you have any. So the new owner arrived. She was a slim grey-haired lady dressed in a spotless white sari. Madam, my daughter Ammu will work for you. She has already cleaned your house before your coming. Chalapa smiled. Then I don't need your help today. Ammu, will you come tomorrow morning? She asked. Ammu nodded. You can go home now. Come at 9 in the morning. The woman sat and asked Chalapa to carry in the suitcases. The new owner's name was Mrs. Mohan, and she was a widow. She had a daughter who was married and lived in Bombay. So, in order to understand the text better, let's go line by line. The new owner arrived. Nua ghar maliko asile, arrived. New owner arrived. Kouthi asile? Na big house ko asile. Who is new owner? Mrs. Mohan. Mrs. Mohan is the new owner. She was a slim. Okay? Mrs. Mohan was slim. She ki pari thile? Slim thile. And grey haired. Grey hair. Tankara chuti dhusara barnara thila. Grey haired lady dressed in a spotless white sari. Dressed. Normally sadharanatha छुआ माने ड्रेस कहले तय माने बुझ पिंधिबा किछि वस्त्र बट जेहेतु इडी लागिछि कोन लागिछि इडी लागिछि दिस कुड बी दिस इज वर्ब एटा हला गोटे क्रिया सो ड्रेस विथ व्हाइट ड्रेस विथ स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी से किपर पिंधिथिले ना गोटे दाग स्पॉटलेस स्पॉटलेस कहले कोन छुआ माने परफेक्टली क्लीन परिष्कार बा दाग मुक्त स्पॉटलेस मिसेस मोहन जते बेले बिग हाउस को आसिले सते बेले से संपूर्ण भावरे गोटे दाग मुक्त धड़ा साड़ी से पिंधिकी आसिथिले. Madam, my daughter Ammu will work for you. She had already cleaned your house before your coming. Chalapa smiled. When the new owner, Mrs. Mohan, entered to the big house, जेतेबेले big house रे new owner Mrs. Mohan enter कले बा प्रवेश कले सेतेबेले ये थिला Chalapa सेठी थिले एवं से कले Madam, my daughter Ammu, madam मो झियो Ammu will work for you. आपनको पाई कामो करिवो. She has already cleared your house before your coming. आपनको आसीबा पूर्वरु से संपूर्ण रूपरे आपनको घर को से ऑलरेडी सफा करी सारिछि. यहा कही Chalapa हसी देले बा Chalapa smiled. Then I don't need your help today. Ammu. तापरे Mrs. Mohan कहउचंती काहाको ना Ammu को कहउचंती. Then ताहेले I don't need your help today. ताहेले आजी मु आ तमरो सहाय्य दरकार करू नाही. ओके सो अम्मू को से कहउचंती आज मु तमरो सहाय्य दरकार करू नाही. विल यू कम टुमारो मॉर्निंग दे आस्क्ड. अम्मू नोडेड. तापरे मिसेस मोहन अम्मू को पचारि छंती जे विल यू कम टुमारो मॉर्निंग तमे आसंता काली सकाळे आसी परिबो कि से पचारिले एवं अम्मू कोन कला नोट कला बा नोडेड कला. व्हाट इज नोट डियर स्टूडेंट्स? नोट nod or nodded to respond by moving head. आदेश सूचक मुंड हलाइला. आमे जते बेले हमको केही किछि पचारि थांती आमे एम्ति मुंड हलै थाउ बा एम्ति करि थाउ दैट इज कॉल्ड नोडिंग और नोड. सो आमु नोडेड से मुंड हलाई बा कोन ह मुंड हलाई से कोन कला से सूचना देला जे मु आसंता गेले सकाळे आसीबी. यू कैन गो होम नाउ. कम एट 9 in the morning. तापरे मिसेस मोहन अम्मू को कहउछंती जे यू कैन गो होम नाउ. तमे वर्तमान घर को जाई पारो. कम एट 9 in the morning. तमे सकाळे 9 रे पहुंची जिवो. The woman said and asked Chalapa to carry in the suitcases. What is suitcases, dear students? These are the pictures of suitcases. आमे जते बेले कुआडे घरु जाई थाउ सते बेले आमे संगरे किछि बैग नै थाउ. That's just called suitcase. What is suitcase here? A box with handle used for carrying clothes. गोटे बैग थिबो तार गोटे हैंडल बा धरिबा पई किछि गोटे थिबो जोथिरे हमें किछि हमर जिनिस पत्र जदि रखिबा पई व्यवहार करछु. That could be called your suitcase.
So the woman said and asked, the woman एठी किए the woman होचंती Mrs. Mohan said and asked से छेला पाखु कहिले कोन to carry the suitcases to carry in the suitcases तबर से जति को suitcases थिला तांको भीतर को आनिबा पई कहिले the new owner's name was Mrs. Mohan एठी हमें जानिबा को पाइले dear students the new owner's name जो नुआ घर मालिक थिले तांको ना थिला Mrs. Mohan and she was a widow she was a widow से गोटे कोन थिले ना विधवा थिले what does it mean widow widow माने विधवा you can see here widow माने होची विधवा हैला विधवा माने कोन dear students जहार पति कर मृत्यु हे जाइथबो एवं से विवाह करि नथिबे सेमिति अवस्था रे जे थाए जो महिला थांती तांको हमें विधवा बोली कहिथौ she had a daughter who was married and lived in Bombay she had a daughter she माने किए she माने होजंती Mrs. Mohan she had a daughter तांकर गोटे झियो थिला बा तांकर जने झियो थिले who was married तांकर विवाहित हेई साइथिला बा से विवाहित थिले and lived in Bombay एवं से मुंबई बा बॉम्बे रे बसवास करूथिले so dear students तमे बुझी पारलो जे न्यू कोन न्यू ओनर बा मिसेस मोहन उनकर एठी प्रवेश हेछि से कोठी प्रवेश करचंती ना बिग हाउस रे प्रवेश करचंती एंड आसिला परे छेलापत हमकु किपरि भाबरे ग्रेट करिछि एवं कोन से अमु किपरि काम करिवो से विषय से कहिसंती so let's go to the next slide so dear students in order to boost your imagination or in order to bring more clarity upon your concept regarding this topic I have added two pictures in this slide so in the first picture you can see a picture of towering buildings in prathama chitra re bahut sa bada bada building अछि जोडा कि city of Mumbai को represent करिसिबा परिप्रकाश करिसिबा दर्शो अछि and in the second picture where there is a lady with gray haired lady with white dress as well so हम पढि दलो कि मिसेस मोहन के परिथिले she was a slim माने पतला एवं gray hair तांकर धूसर वर्णर चोटी थिला एवं से spotless white side रे आसीथिले so these are the two pictures which can help you to bring more clarity upon your concepts of this part so next go to the next slide again we find here some text so dear student again I am reading the text loudly and meanwhile you can if you find some doubts regarding your pronunciation you can rectify by your own the next morning Amu went to Mrs. Mohan's house good morning Amu Mrs. Mohan greeted her come and have a glass of tea before beginning work since you cleaned house thoroughly only yesterday it will be enough if you just dust everything it will be busy unpacking I will be busy unpacking in the bedroom if you want anything Amu washed the few vessels she found in the sink she took up the duster and went to the drawing room the bookcase drew her like a magnet so dear student the next morning because in the first text when Mrs. Mohan entered to big house Thalapa told her that his daughter Amu has already cleaned her house so Mrs. Mohan told Amu to come to big house in the next morning so in the next morning Amu went to Mrs. Mohan's house आरो दिन सकाळे अमु big house को आसिला Mrs. Mohan को घर को आसिला good morning Amu Mrs. Mohan greeted her good morning Amu ये जो गुड मॉर्निंग कहिसंते एटा के कहिसंते डियर स्टूडेंट्स एटा मिसेस मोहन कहिसंती काहा को कहिसंती अम्मू को कहिसंती गुड मॉर्निंग अम्मू मिसेस मोहन ग्रीटेड हर व्हाट डज इट मीन डियर स्टूडेंट्स ग्रीटेड माने ग्रीट माने कोन देखिबा वेलकम करिबा ग्रीट माने कोन वेलकम करिबा नमस्कार करिबा बा अभिवादन करिबा जेहेतु मिसेस मोहन ग्रीट कले मिसेस मोहन अम्मू को नमस्कार करिवे नाही से कोन करिवे अभिवादन करिवे किंतु जते बेले गोटे जूनियर व्यक्ति बा छोटा व्यक्ति जन को वेलकम करूछंती
बा ग्रीट करूछंती से नमस्कार मध्य करि पारंती। सो मिसेस मोहन ग्रीटेड हर माने मिसेस मोहन कहा को ग्रीट कले अम्मू को ग्रीट कले बा अभिवादन जणाइले। कम एंड हैव ए ग्लास ऑफ टी बिफोर बिगिनिंग वर्क तापरे मिसेस मोहन कहउछंती अम्मू को कम एंड हैव ए ग्लास ऑफ टी आसो एवं चाहा कपे पीनियो बिफोर बिगिनिंग वर्क काम आरंभ करिवा पूर्वरु तमे आसिके चाहा गोटे कप पी के आरंभ करो। बिगिनिंग व्हाट डज इट मीन बिगिनिंग बिगिनिंग कहले कोन स्टार्ट बा आरंभ करिबा बिगिनिंग माने आरंभ करिबा। So since you cleaned the house thoroughly only yesterday it will be enough if you just dust everything। तापरे मिसेस मोहन अम्मू को कहउचंती since you cleaned the house thoroughly since जेहेतु तमे घर को संपूर्ण thoroughly माने कोन completely बा संपूर्ण भाबरे बा सम्यक रूपे समस्त दिगरु। ओके सो सिंस यू क्लीन द हाउस थोरली ओनली यस्टरडे जेहेतु गतकाली ही तमे घर को संपूर्ण रूप से सफा करिछ इट विल बी एनफ एटा जथेष्ट एनफ माने कोन जथेष्ट इट विल बी एनफ इफ यू जस्ट डस्ट एवरीथिंग देयर टू वर्ड जस्ट एंड डस्ट कोन जस्ट एंड डस्ट कंफ्यूज हबनी पिले डस्ट अलगा जस्ट अलगा सो एटी कहै छी it will be enough if you just dust everything तमे खाली what is dust dear students dust माने हला धूली बा धूली गुंड एठी लिखाई छी it will be enough if you just dust everything से मिसेस मोहन कहउचंती जद एटा यथेष्ट हे जिवो जदि तमे खाली सब जिंस को झाड़ी दबो एठी धूली लिखाई छी किंतु जेहेतु एठी डस्ट वर्ड ता गोटे वर्ब रूप रे व्यवहार हेई छी आमे कोन कहिबा धूली झाड़ीबा ताको आमे कोन कहू डस्ट कहू जेतेबेले आमे कोनोसी जगह रे धूली लागि जाइथिबो ताको जदि आमे सफा करिबा by using some cloths or something by duster we can say dust। okay so dust everything सब जिंस को टिके झाड़ी दे सेतिकरे यथेष्ट हेई जिवो। I will be busy unpacking in the bedroom if you want anything तापरे मिसेस मोहन कहउचंती I will be busy मु व्यस्त हेई जिबी unpacking माने कोन डियर स्टूडेंट्स unpacking unpack माने open and remove contents of luggage खोली बाहर करिबा जेतेबेले कोनोसी बैग रो बा कोनोसी रखाइतबा जिंसो को हम यदि खोली के बाहर करू छे दैट कुड बी कॉल्ड अनपैकिंग ताको हमें अनपैकिंग कहिबा। सो आई विल बी बिजी अनपैकिंग इन द बेडरूम जेतेबेले मिसेस मोहन आसिले बहुत सारा लगेज आनिथिले से लगेज रो बहुत किछि सामान बाहर करिबार थिला ए सजै के रखिबार थिला त से जिंसटा से कहउचंती आई विल बी बिजी मु व्यस्त हेई जिबी ना कोन पई अनपैकिंग इन द बेडरूम मु बेडरूम रे अनपैक करिवारे व्यस्त हेई जिबी इफ यू वांट एनीथिंग जदि तोते किछि दरकार तू कहि पारो। Ammu washed the few vessels she found in the sink। Ammu washed Ammu कोन कला wash माने कोन सफा करिबा washed माने से सफा कला के Ammu washed few vessels what does it mean dear students vessels माने हे गेला utensils पात्र बा ताटिया दैनंदिन जीवन रे हम जो व्यवहार करू छे खाइबा पई बा पीबा पई से सब जिंस को हम कोन कहिबा vessels बा utensils कहि परिबा। So Ammu washed few vessels she found in the sink say sink re what does it mean sink dear students sink this is called sink dear students साधारणतः भाव रे ए सिंक ता रोसई करे थाए एवं आमे किछि पात्र बा किछि कंटेनर आमे व्यवहार कला परे ताकू धोइबा पई एठी रखाई थाए एठी गोटे पानी टैप थिबो दिस इज कॉल्ड सिंक इन अदर वर्ड वी कैन कॉल दिस बेसिन मध्ये कहि थाउ। So Ammu found some vessels इति जेमति रखाई छी अम्मू को मध्ये सेमिति किछि vessels वा utensils से किछि पाइला एवं पाइला परे से सब को कोन गला से सफा करला। तो ओके सिंक तमे देखि पारिबो डियर स्टूडेंट्स सिंक माने लार्ज बेसिन इन ए किचन अल्प गभीर पात्र से पात्र किछि मात्रा रे हल्का गभीर थाए आ सेहिथरे आमे व्यवहार हेइतबा बासन सब बा पात्र सब को आमे रखि दो ना कोन करिवा पई ना धोइबा पई। She took up the duster and went to the drawing room. The bookcase drew her like a magnet. She took up the duster. A student साधारणतः भाव रे डस्टर कहले तमे माने बुझी पारुथबो जे डस्टर कहले तमे जानिछो ना ब्लैक बोर्ड को सफा करिया पई जो गोटे छोटो रहउचे सेटा को हम डस्टर कहिथो बट डियर स्टूडेंट्स डस्टर मींस समथिंग बाय व्हिच वी क्लीन द डस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो जिनस द्वारा बा जो वस्तु बा जो पदार्थ द्वारा
आमे धूली को सफा करिथो आमे ताको डस्टर कहिबा से हुए तो गोटे कपड़ा ही पारो से तो हुए गोटे किछि ही पारो तो आमे ताको कोन कहिबा डस्टर कहिबा डस्टर डजंट ओनली मीन से गोटे काठ थिबो तारि किछि कॉटन टाइप रो लागि थिबो डस्टर माने जो द्वारा आमे झाड़ू सफा जो जिंस द्वारा आमे डस्ट बा धूली को सफा करूछे आमे ताको कोन कहिबा डस्टर कहि परिबा सो शी टुक अप द डस्टर कि शी हु इज सी हियर शी मींस अम्मू कोन कहला टुक अप द डस्टर से डस्टर को उठेला दैट मे बी झाड़ू ही पारे किछि कपड़ा ही पारे एंड से कोन कहला एंड वेंट टू द ड्राइंग रूम तापरे से डस्टर को उठेला परे से डस्टर को धरिला परे से कोन कहला ना ड्राइंग रूम को गला फॉर दिस ड्राइंग रूम डियर स्टूडेंट्स this picture could be enough for you to understand about the drawing room ए पिक्चर को तमे देखि पारो इटा होछि ड्राइंग रूम एंड बसिबा घर ड्राइंग रूम माने बसिबा घर एंड देयर इज समथिंग we'll know in this line the bookcase drew her like a magnet so this is the picture of a bookcase माने जो केस रे बही सब को रखा जाय बा थाको जो थाको बही सब को रखा जाय ताको हमें कोन कहितो bookcase कहिथाउ so the bookcase drew her like a magnet bookcase this is the picture of bookcase as well as the drawing room attached here so bookcase drew her like a magnet drew माने कोन दिस draw रो past tense है drew माने टाणीबा drew माने टाणीला bookcase अमुको किपरि भाबरे टाणीला ना like a magnet what is magnet माने हे गेला चुंबक सेठी जो गोटे bookcase थिला ड्राइंग रूम रे से ड्राइंग रूम रे थिबा bookcase अमुको गोटे चुंबक परे टाणीला okay next let's go to the next slide so eta tome janilo I told you about the basin and about the uses of this sink how we use in the kitchen after using this pots or this utensils we just keep all this used utensil in the basin and we clean by water so abe dekhi paribo this is the picture of bookcase in a larger size okay so this is a common room here some sofa some sitting arrangement has been done here and there is a bookcase kichi pustak rakha heichi ebong bosiba pe kichi sofa rakha heichi so it is a drawing room along with a big bookcase next here also you find some text okay so dear student again I will read the text loudly and meanwhile if you find some pronunciation issue you just rectify by your own she fingered the books lovingly and gazed at the pictures in a book Ammu turned as she heard footsteps approach I will have to sort out all the books there is quite a vast collection here and my own books will be coming soon said Mrs. Mohan pretending not to have noticed the book in Ammu's hand now sit down and tell me about yourself do you have any brothers and sisters I have a younger brother Chinni he is 5 years old said Ammu what does he do Appa is sending Chinni to school from next week Ammu's voice held a tremor don't you also want to go to school Mrs. Mohan asked gently Appa says it will be of no use to me as I am a girl. If Chinni is educated, it will help him to get a job. Ammu replied without emotion, shall I go and wash the clothes? The students, in order to understand better, let's go line by line. She fingered the books lovingly and gazed at the picture in a book. Finger, what does it mean? साधारणतः भाबरे finger कहले त माने जानिछो finger means this is finger but finger एठी इडी लागि छि माने एटा verb form रे अछि सो जते बेले हमें बही को कुछ लाइब्रेरी रू काढू बा कुछ सेल्फ बा किछ ठाकुर काढिथो हमें साधारणतः भाबरे आंगुठी एमति लगे के काढू that could be one finger सेटा मते finger है परिबो एठी अछि इ केमिति आंगुठी रे इ फोटो चित्र रे तमे देखि पारुथबो how she is looking at the pictures of that book by rotating the pages by using her finger आंगुठी को व्यवहार करी बा आंगुठी को यूज करी से केमिति पेज ऊपर पेज उल्टे की से फोटो चित्र देखुची that could be the meaning of finger so she fingered the books ये आंगुठी रे बही को एपटे सेपटे करी के lovingly
फिंगर द बुक्स लविंगली एंड गेस्ट एट द पिक्चर्स इन बुक गेस्ट माने कोन देखि परिबो निरेखिबा बा स्थिर दृष्टि रे चाहिबा फिंगर माने टच एंड फील विथ द फिंगर्स आंगुठी लगेई छुईबा हैला जते बेला हमें पुस्तक धरि थाउ हमें कोन करू ना आंगुठी लगेई छुई थाउ एवं ताकू पेज टर्न करि थाउ तो सेमिति कोन गला अमु मध्ये से कोन गला जते बेला ड्राइंग रूम को से पसिला सफा करिया पई सेते बेले से बुक सेल्फ को देखि देछि बा बुक केस को देखिछि एवं बुक केस को देखिला परे से कोन कहिछि बुक केस याकू गोटे मैग्नेट करि टानिछि टानिला परे हमु से बुक केस पाकु जाईकी किछि गोटे पुस्तक आनिछि एवं सेतिरे किछि फोटो चित्र से देखिछि गेस्ट माने स्थिर दृष्टि रे चाहिबा ध्यान सहित चाहिबा दिस कुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गेजिंग एंड फिंगरिंग ओके अमु टर्न एज शी हर्ड फुटस्टेप्स अप्रोच अमु टर्न माने कोन बुली पड़ीबा एते बेले बोलबे एज शी हर्ड जते बेले से सुनिला फुटस्टेप्स माने व्हाट डज इट मीन फुटस्टेप्स हियर यू कैन फाइंड द मीनिंग साउंड ऑफ फुट चलीबार शब्द बा पादर शब्द जते बेले अमु चलीबार शब्द बा पादर शब्द से सुनिला से कोन करछि ना टर्न करिछि टर्न माने बुली पड़िछि अप्रोच माने कोन पाखै आसुथिबार शब्द माने गोटे पाद चलार बा के जने चली आसीबार शब्द जते बेले हम सुनि देछि से कोन करिछि ना बुली पड़िछि I will have to sort out all the books. There is a quite vast collection here and my own books will be coming soon. किया आसुथिला सेते बेले मिसेस मोहन आसुथिले and so कहउचंती आसिला परे I will have to sort out all the books. Sort out माने कोन डियर स्टूडेंट्स sort out. Here you can find the meaning of sort out. Separate and similar set. समाधान करिबा बा पृथक भाबे रखिबा. जते बेले से अन्य घर आसिले बे हाउस रे रहिबा सेते बेले से कोन गले ना बही सब को एते सजाई की रखि नथिले तो sort out means सजाई की रखिबा. So I will have to sort out all the books. ए सब कहि को भलो भाबे रखिबार अछि. There is a quite a vast collection here. एठी बहुत सारा vast quite माने complete बा संपूर्ण रूपे. Vast माने huge बा विशाल बा विपुल. माने एठा बहुत सारा कलेक्शन अछि बा बहुत सारा बही मानकर अछि एठी. So there is quite a vast collection here and my own books will be coming soon. एवं मिसेस मोहन लिखितबा किछि बही मध्ये से कहउचंती जे माय ओन बुक्स मो निज बही मध्ये बहुत शीघ्र आसीबो. That Mrs. Mohan pretending not to have noticed the book in Amu's hand. एहा कहउथबा समय रे से गोटे pretend माने कोन डियर स्टूडेंट्स create a false impression or appearance either playfully or decidedly बहाना करिबा. एतेबेले गोटे जिंस को तमे जानिला परे मध्य न जानिला परि हेबा सेटा को हमें कोन कहउछु ना प्रिटेंड कहउछु. सो से मिसेस मोहन जेतेबेले से ड्राइंग रूम को पसिले सेतेबेले कोन करथिले ना अमु कोन करथिले से गोटे बही धरि के से ध्यान सहित देखुथिला और सेतेबेले मिसेस मोहन बहाना करिगी कोन ना हैव प्रिटेंडिंग नॉट टू हैव नोटिस से न देखिला परि बहाना कले एवं इन अमुसेन से अमु हाथ जो बही थिला से बही को न देखिला परि से हेले नाउ सिट डाउन एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तापरे से कोन कहिले मिसेस मोहन हमको कहिले नाउ सिट डाउन एंड टेल मी अबाउट एबे बसो एवं टेल मी अबाउट योरसेल्फ तमे निज विषय रे बा तम विषय रे मते किछि कह. डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तापरे मिसेस मोहन पचारि छंती डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर तमरे केही भाई और भौणी माने अछंती कि. तापरे अमु कोन कहिछि आई हैव ए यंगर ब्रदर चिन्नी मोर गोटे छोट भाई अछि जहार ना कोन ना चिन्नी. He is 5 years old. तार बयस केते तार बयस मात्र 5 वर्ष. Said अमु एहा के कहिला अमु कहिला. What does he do? जिनस के पचारि छंती ए जिनस पचारि छंती मिसेस मोहन काहा को पचारि छंती ना अमु को पचारि छंती. What does he do? के ना चिन्नी कोन करे. Appa is sending Chinni to school from next week. Amu's voice held a tremor. Appa is sending Chinni to school. जे मो बापा चिन्नी को नेक्स्ट वीक बा आसंता सप्ताह रो कोन स्कूल को पठाउछंती. Amu's voice held a tremor. Amu's voice माने अमुर स्वर held a tremor. Tremor माने कोन डियर स्टूडेंट्स shaking, tremor, shaking और quivering माने कंपन बा थरिबा. जेते बेले से इमोशनल हे जाइतला बा से
सेड हे जेतला जेतेबेले ए कथा आमे शिक्षा बा पढिबा कथा पढिला जेतेबेले मिसेस मोहन तांको पचारिले कोन जे तम भाई कोन करे सेतेबेले अम्मु कहिला जे मो भाई को आसंता सप्ताह रु मो बापा कोन स्कूल को पठाउछंती एवं से कहिला समय रे ता मनरु कोन ना कोह बाहरी आसीची एवं ता शब्द बा ता स्वर कंपन कला परे हेछि don't you also want to go to school Mrs. Mohan asked gently जेतेबेले अमु ता भाई विषय कहला सेतेबेले मिसेस मोहन संपूर्ण रूप रे बुझी गेले जे अमु मध्ये स्कूल को जिबा को चाहूची तेम ताको स्नेहर सहित सरलतार सहित ताको बा सॉफ्टली ताको कोन पचाइले कोमड़ भाव रे कोन पचाइले डोंट यू आल्सो वांट टू गो टू स्कूल तुम मध्ये स्कूल को जिबा को चाहूचो की Appa says it will be of no use to me as I am a girl तापरे अमु कहूची Appa says माने मो बापा who is Appa here dear students Appa माने होचंती छल्लाप्पा I mean Ammus and Chini's father so Appa says बापा कहंती it will be of no use माने एहारो किछि महत्व नाही as I am a girl मु जते शिक्षा ग्रहण कले मध्य मु जते पढिले मध्य एहारो महत्व बा एहारो वैल्यू एहारो मूल्य किछि नाही बिकॉज़ कारण मु गोटे झियो मात्र If Chini is educated, it will help him to get a good job. Amu replied without emotion. तापरे अमु कहिछि जे if Chini is educated, जदि चिनी को शिक्षा प्रदान करा जाए बा चिनी शिक्षित हुए, it will help him to get a good job. यहा ताकू गोटे भलो चाकरी खंडे पाइबा पई सहाय्य करिवो. Amu replied without emotion. से replied without emotion. से भावनार सहित से रिप्लाई माने भावना नथिला परी से रिप्लाई कला बा प्रत्युत्तर देला shall I go and wash the clothes तापरे हमु कोन पचाइला shall I go and wash the clothes मु जाई की कपड़ा सब को सफा करबी की एहा पचाइला so dear students तमे बुझी पाइलो so with this your text ends now what we learn throughout this second part of the story I have summarized the second part with some few lines so let's have a look on summary part. So first point, Chellappa's new owner arrived to the big house whose name was Mrs. Mohan. आमे स्टार्टिंग रे जानिबा को पाइले प्रथम रे जानिबा को पाइले जे छेलापार न्यू घर मालिक बा नुआ घर मालिक के मिसेस मोहन जार ना थिला मिसेस मोहन से बिग हाउस को आसिले ओके नेक्स्ट पॉइंट मिसेस मोहन वाज स्लिम एंड ग्रे हेयर लेडी हु वाज आल्सो ए विडो मिसेस मोहन को केमिति थिला तांकर लुक बा तांकर केमिति से थिले मिसेस मोहन वाज स्लिम से कोन थिले स्लिम बा पतला थिले ग्रे हेयर माने धूसर वर्णर चुटी तांकर थिला हु वाज आल्सो ए विडो से जेतु स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी पिनिथिले एथिरु जणा पडुथिला से गोटे विधवा थिले नेक्स्ट पॉइंट्स कोन दैछे मिसेस मोहन वाज एन एजुकेटेड वुमन एंड वेरी पोलाइट इन नेचर मिसेस मोहन वाज एन एजुकेटेड वुमन मिसेस मोहन जणे एजुकेटेड वुमन माने शिक्षित महिला थिले एंड वेरी पोलाइट इन नेचर तांकर प्रकृति बा तांकर स्वभाव अति सरल बा शांत स्वभावर थिला नेक्स्ट पॉइंट Chellappa introduced his daughter Amu with the new owner Chellappa introduced what does it mean dear students introduced माने परिचय कराइबा so here we find the past tense so Chellappa introduced से परिचय कराइले his daughter तांको झियो को कहा सहित ना with the new owner के Mrs. Mohan offered tea to Amu before cleaning the house तापरे जते बेले नेक्स्ट मॉर्निंग रे अमु मिसेस मोहन को घर को जाईछि काम करिया पई सते बेले मिसेस मोहन ऑफर टी से ताको चाहा पीवा पई देले बिफोर क्लीनिंग द हाउस घर सफा करिवा पूर्वरो अमु को से चाहा देइथिले अमु वाज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द बुक केस व्हिच वाज इन द ड्राइंग रूम अमु वाज वेरी मच अट्रैक्टेड अमु बहुत मात्रा रे अत्यंत भावर से अट्रैक्टेड हेतिला बा आकर्षित हेतिला बाय द बुक केस से जो ड्राइंग रूम रे थिबा से जो बही थाक बा बही बुक केस द्वारा से बहुत मात्रा रे कोन ना आकर्षित हेतिला जोटा कि ड्राइंग रूम रे थिला Amu's attending school was restrained by her father Amu's attending school अमुरो विद्यालय को जीवा attending माने कोन स्कूल को जीवाडा Amu's attending school was restrained by her father restrained माने कोन संपूर्ण रूप रे मना करिबा माने जेहेतु छेलापा से चाहूतिले जे खाली चिनी विद्यालय को जाऊ एवं जेहेतु अमु कोन ना थर्ड ग्रेड पढिबा पूर्व ही तार
विवाह हो जबो तेणु से चाहूथिले जे खाली चिन्नी विद्यालय को जाऊ एवं कोन अमु से बिग हाउस रे से काम करू तेणु चिन्नी रो अमुर पाठ पढ़ा को संपूर्ण रूप रे से कोन करथिले ना मना कर दैथिले Mrs. Mohan came to know about Amu's desire to study. In the last point, Mrs. Mohan, the new owner of the big house, came to know. से जानिबा को पाइले ना कोन about the Amu's desire to study. से अमुर पाठ पढ़ा प्रति थिबा जो इच्छा को से निश्चय भाव से जानि पारिथिले एवं नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा कोन तापरे अछि बट नाउ बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन so dear students you will get here some questions and for each questions you have 4 options so first question dear students who was the new owner of the big house you have 4 options Mrs. Mohan Chelappa Amu and the watchman who was the new owner of the big house रो न्यू ओनर के थिले ऑप्शन ए मिस्टर मोहन मिसेस मोहन ऑप्शन ए मोहन मिसेस मोहन ओके वेरी गुड ओके थैंक यू वेरी गुड सेकंड क्वेश्चन हाउ वाज द न्यू ओनर ऑफ द बिग हाउस ड्रेस्ड स्पॉटलेस ब्लैक साड़ी स्पॉटलेस ब्लू साड़ी स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी स्पॉटलेस ग्रे साड़ी व्हाट विल बी द राइट आंसर use your microphone and tell आंसर कोन आबो पिला माने ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी हबो नहीं ऑप्शन सी is the right answer option C is the right answer spotless white saree okay third question what did Mrs. Mohan asked to Chelappa को Mrs. Mohan कौन कहिथिले to clean the house to educate Chinni to meet Mrs. Mohan to carry suitcases कौन कहिथिले option D very good to carry suitcases very good this will be the right answer question number 4th who was living in Bombay रे के रहउतिले Chelappa, Mrs. Mohan's daughter, Mrs. Mohan and some other people. के रहउतिले? Mrs. Mohan daughter. Mrs. Mohan's daughter. Very good. The B is the right answer. Fifth question. What drew Ammu like a magnet? The magnet, the bookcase, Chinni, the drawing room. Answer कौन आबो? The bookcase. Very good. C, B will be the right answer. Question number 6. Who looked slim and grey-haired? Ammu, Mrs. Mohan, the servant, Chelappa. Mrs. Mohan looked grey and slim and grey-haired. Nahi? So Mrs. Mohan will be right answer. Very good. Then I don't need your help today. Who said this? Option देखो. Chelappa, Ammu, Mrs. Mohan, the watchman. Mrs. Mohan. Very good. Mrs. Mohan. Very good. Question number 8. When did Ammu go to Mrs. Mohan's house? What about next day, next morning, next week, next month? What I have answered? Next morning. Next week. Next morning. Next week. Morning. Next morning. Next morning. से घर सफा करिया पई आरो दिन सकाळे से जाइथिला. So next morning is the right answer. Question number 9. Who had a younger brother? कहार गोटे छोटा भाई थिला? चिन्नी, अम्मू, Chelappa, Ammu is the right answer. Very good. Question number 10. Hello. From when Appa is sending Chinni to school? केबे ठारू Appa Chinni को स्कूल को पठाउछंती? From next day, from next week, from next month, Next week. From next week. Next is the right answer. Okay. Question number 11. Will you come tomorrow morning? Who asked this? एक कथा के पचारि थिले? Chelappa, Ammu, Mrs. Mohan, Chinni के पचारि थिले? Mrs. Mohan.
Mrs. Mrs. Mohan Mohan. amku pachariile kali sakalu asibo ki? Very good. So Mrs. Mohan is the right answer. Question number 12. The woman in the next text refers to whom? The text जो the woman को है थी सेटा कहा को बुझा जाउची? अम्मू ना मिसेस मोहन ना ए लेडी और मिसेस मोहन's daughter कहा को कहा जाउची? Option B. Option B, Mrs. Mohan. Very good. Option B. Very good. Question number 13. By whom Amu was greeted? कहा द्वारा Amu greeted ହେଇଥିଲା? By Chelapa, by Chini, by Mrs. Mohan, by someone? By Mrs. Mohan. By Mrs. Mohan. Very good. C will be the right answer. Question number 15. Of what use will education be to you? Who said this sentence? ए वाक्य को किए कहिथिले? चिन्नी, छेलाप्पा, Mrs. Mohan, Mrs. Mohan's daughter. किए कहिथिले? Hello. The right answer will be Chelappa. Right answer will be Chelappa. And question number 15. Don't you also want to go school? Who speaks this line? Chelappa, Mrs. Mohan, Ammu, Chini. ये लाइन टी किए कहिथिले? Hello. Option D. B. 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 D. Mrs. Mohan. Mrs. Mohan will be the right answer. Very good. Next. So dear students, you have one homework. You can write down your homework. Write down at least 10 points why education is very much important for each one of us. You can write it by your own and you can show it to your concerned teachers. Thank you, dear students.